Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So, I have already uploaded 17 parts of the PYQ series. If you haven't watched them yet, make sure to check them out. You'll find all the links in the description below. So, today we are moving on to part 18 where I'll cover more important PYQs. We'll be discussing more important PYQs. So make sure to watch this video till the end because these questions are really helpful for your preparation. Also, I have already completed 200 questions in this series and have also uploaded the PDF of these 200 questions on my Telegram channel. If you haven't downloaded it yet, go check it out. मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी सोशियोलॉजी. यूल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मेरे टेलीग्राम चैनल का. So once we complete 400 questions, I'll upload another PDF with the remaining questions. Alright, let's get started with today's first question, that is question number 246. The Matthew effect in sociology refer to: option A, how economic capital influences social mobility. Option B, the process where the rich gets richer and the poor gets poorer. Option C, the impact of religious beliefs on social behavior. Option D, how social network influence educational outcomes. Also tell me in the comments कि मैथ्यू इफेक्ट जो था कॉन्सेप्ट दिया किसने था. The correct answer is, देखो मैथ्यू इफेक्ट होता क्या है. मैथ्यू इफेक्ट सबसे पहले दिया था रॉबर्ट किंग मर्टन ने. मैथ्यू इफेक्ट होता क्या है. मैथ्यू इफेक्ट Robert King Merton means that people who already have advantages of, let's say, money or education, etc., they keep on getting more, while those who have little, they struggle to improve. For example, let's take an example of a rich student and a poor student. So rich student can afford better schools, tutor and books, so they keep learning and succeed more. But a poor student may not have these resources, so it's harder for them to succeed. So this creates a cycle where rich becomes richer and poor stays poorer. Alright, the correct answer is option B, the process where the rich get richer and the poor get poorer. Question number 247. Which of the following sociologists studied how moral panics shape public perception? Option A, Stuart Hall. Option B, Stanley Cohen. Option C, Michel Foucault. Option D, Jürgen Habermas. मॉरल पैनिक्स का कॉन्सेप्ट किसका था. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टेनली कोहेन. So moral panic means that the media makes some social issues seem much bigger and scarier than they really are. For example, if a few teenagers create trouble, the media may keep showing it again and again, making people think all teenagers are dangerous. So this leads to fear, strict laws, and unfair treatment of certain groups like, let's say, migrants or protesters, even if they are not a real threat. Question number 248. The concept of symbolic violence in sociology was introduced by. Symbolic violence का concept किसका था? Who gave this concept? Option A, Pierre Bourdieu. Option B, Michel Foucault. Option C, Jürgen Habermas. Option D, Antonio Gramsci. This concept was given by option A, Pierre Bourdieu. So symbolic violence, say, he meant that people accept social inequalities as natural, even though they are imposed by dominant group. Question number 249. According to Norbert Elias' civilizing process, modern societies differ from medieval societies in terms of: option A, reduced state control over individuals. Option B, increased emotional restraint and self-regulation. Option C, greater dependence on kinship networks. Option D, decline in bureaucratic institutions. Question number 249.
The correct answer is option B, increased emotional restraint and social regulation. So Norbert Elias explained that modern people control their emotions. यहाँ पे कह रहा है ना increased emotional restraint, so they control their emotion more and follow stricter social rules, unlike medieval societies where behavior was less regulated. Question number 250, code based question है. Which of the following statement about postmodernism are correct? Option A, it rejects grand narratives and universal truths. Option B, it emphasizes fragmented identities and cultural relativism. Option C, it supports objective and scientific explanation of society. Option D, it considers technology as an agent of progress. Question number 250. So postmodernism challenges universal truth, right? Option A, and rejects grand narratives and universal truths, and says that identity is fluid and uncertain. Like for example, in the past, being a doctor or a teacher defined a person's identity. But today, people often change their careers, their identities, their beliefs, making their identity more flexible, more fluid. So it does not fully support scientific explanation, right? Because postmodernists argue that knowledge is shaped by society. यहाँ पे कह रहा है इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इन सोसाइटी, जबकि ये चीज़ गलत है पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए. उन्होंने इसको चैलेंज किया था. इट ऑल्सो डज नॉट बिलीव दैट टेक्नोलॉजी ऑलवेज लीड्स टू प्रोग्रेस, राइट. तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, सिंस टेक्नोलॉजी कैन बोथ हेल्प एज वेल एज इट कैन हार्म आवर सोसाइटी. Therefore, the correct answer is option 1, A and B. Now match the following question. Question number 251. There are some sociologists और उनके वर्क दिए हैं, हमको मैच करना है करेक्टली. A. Anthony Giddens. B. Pierre Bourdieu. C. Irving Goffman. D. Michel Foucault. What is the correct answer to question number 251? The correct answer is, देखो A का 2. पियर बुर्दो का कौन सा था कॉन्सेप्ट? पियर बुर्दो की बुक थी द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, जहाँ पर वो हैबिटस एंड सोशल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ सोसाइटी में गिडन्स ने स्ट्रक्चरेशन की थ्योरी दी थी. गॉफमैन का स्टिग्मा था, note on management of spoiled identity, like how society treats people with negative labels. और मिशेल फुको ने discipline and punish दिया था कि how power controls behavior. Therefore, the correct answer is option 1. Question number 252. The concept of double consciousness was developed by. डबल कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑप्शन ए W.E.B. Du Bois. ऑप्शन बी फ्रांस फैनन. ऑप्शन सी एडवर्ड साइड. ऑप्शन डी स्टुअर्ट हॉल. The correct answer is option A. W.E.B. Du Bois. उन्होंने डबल कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट दिया था, वेयर ही एक्सप्लेन्ड, ये एक तो खुद भी ब्लैक अमेरिकन थे. ही ऑल्सो एक्सप्लेन दैट हाउ ब्लैक अमेरिकन सीज देमसेल्व्स इन 2 ways. 2 तरीके से वो खुद को देखते थे कि हाउ दे व्यू देमसेल्व्स एंड हाउ वाइट सोसाइटी व्यूज देम. सो this creates identity conflict among them. For example, a black student might feel pressure to act differently at home and at school to fit into different cultures. Right? जैसे जो अलग अलग कल्चर्स है, जो भी उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो उसको वैसे परफॉर्म करें.
All right. Question number 253. Which of the following theories explain how people attach meaning to objects and interact with them accordingly? Option A, structural functionalism. Option B, symbolic interactionism. Option C, conflict theory. Option D, world system theory. Very easy question. The correct answer is option B, symbolic interactionism. So this theory was developed by Mead and Bloomer. They both said that people create meaning through interactions. जैसे कि रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप, बिकॉज वी अग्री ऑन इट्स मीनिंग, राइट. तो ऐसे हमने बहुत से मीनिंग बना रखे हैं और वो पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि हम इंटरैक्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 254. अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन. Arrange the following sociological thinkers in chronological order based on their emergence. Sociological theories. Option A, structural functionalism. Option B, conflict theory. Option C, postmodernism. Option D, symbolic interactionism. Also tell me in the comments कि हर theory के साथ किनका कौन से thinkers का नाम attached है, कौन से thinkers किन theory में आते हैं, किस किस theory में आते हैं. तो सबसे पहले आएगा हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, देन कम्स सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, मीड की थ्योरी. उसके बाद आती है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कार्ल मार्क्स की. और आखिरी में आएगी हमारी पोस्ट मॉडर्निज्म. देयरफॉर ए, डी, बी एंड सी. ए, डी, ऑप्शन 3 ए, डी, बी एंड सी. सो पोस्ट मॉडर्निज्म में कौन आएंगे? पोस्ट मॉडर्निज्म में थिंकर्स लाइक मिशेल फुको और बॉद्रिलार्ड, ये सब थिंकर्स आते हैं जहाँ पर उन्होंने जो बिग थ्योरीज हैं उनको चैलेंज किया था. दे रिजेक्ट बिग थ्योरीज, सेइंग रियलिटी इज शेप्ड बाय पावर एंड लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 255. द नेटवर्क सोसाइटी थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय, वेरी इजी क्वेश्चन, हम कितनी बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं. नेटवर्क सोसाइटी की जो थ्योरी थी किसने डेवलप करी थी? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय ऑप्शन ए, मैनुअल कैसल. सो कैसल एक्सप्लेन्स हाउ टेक्नोलॉजी कनेक्ट्स पीपल वर्ल्ड वाइड, मेकिंग इंफॉर्मेशन फ्लो फास्टर, राइट. क्वेश्चन नंबर 256. विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स contributed to the study of coloniality of power? Option A, Annabel Cuyano. Option B, Immanuel Wallerstein. Option C, Frantz Fanon. Option D, Gayatri Spivak. New question. Coloniality of power. The correct answer is, एक तो Cuyano आएंगे, Fanon, Frantz Fanon and Gayatri Spivak. Therefore A, C and D, option 4. So Cuyano का जो coloniality of power है, इसमें इन्होंने कहा कि even after colonial rule ended, colonial ideas still shape education, politics and education. फैनन कहते हैं, फैनन ने भी colonial oppression और उसके psychological effects को study किया था. उनकी theory भी थी psychological effects of colonialism. So he explains how colonial rule made people feel inferior. और गायत्री स्पिवाक का भी ऑलरेडी नो, उन्होंने सबाल्टर्न स्टडीज किए थे. सबाल्टर्न स्टडीज में भी सी गायत्री स्पिवाक. So she explains how history ignores the voices of oppressed people. Question number 257. The concept of habitus in Bourdieu's theory refers to option A, the total structure of society. Option B, deeply ingrained habits, dispositions and behaviors shaped by social structures. Option C, economic capital determining class positions. Option D, the influence of religion on modern societies.
Question number 257. Very easy question. The correct answer is option B, deeply ingrained habits, dispositions and behaviors shaped by social structure. So देखो कीवर्ड है disposition, habit, behavior. So Bourdieu का जो habitus था, by this theory Bourdieu meant that people act based on their habits, based on habits they learn from their social background, like how rich and poor people behave differently without thinking about it. Question number 258. Who introduced the term liquid modernity? Again the repeated question. Liquid modernity का concept किसका था? Ulrich Beck, Zygmunt Bauman, Anthony Giddens, Jean Baudrillard. Question number 258. The correct answer is Zygmunt Bauman. I don't think so कि लिक्विड मॉडर्निटी की थ्योरी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 259. अकॉर्डिंग टू मिशेल फुको, बायो पावर रेफर्स टू ऑप्शन ए द कंट्रोल ऑफ the control of populations through biological and medical interventions. Option B, the dominance of nature over human society. Option C, the role of religion in shaping political ideologies. Option D, the use of physical force to establish government authority. Question number 259. The correct answer is option A, the control of population through biological and medical interventions. So Foucault's biopower means government use things like जो हमारी health care policies आती हैं, vaccinations होते हैं, birth control tools होते हैं to manage people's life. So for example, mandatory vaccinations and birth control policies are ways the government influence people's body. Question number 260. Let me zoom it out. All right. So 260 को मैच करना है. इसके करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं. Here. कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनके थ्योरिस्ट उनके सामने हैं. हमको मैच करना है कौन से थ्योरिस्ट का कौन सा कॉन्सेप्ट है. रिफ्लेक्सिविटी, ओरिएंटलिज्म, सबऑल्टर्न स्टडीज, पेनॉप्टिकन. The correct answer is, ये ऑलरेडी मैच्ड हैं, करेक्टली मैच्ड हैं. देयरफॉर ऑप्शन 1, ए का 1 रिफ्लेक्सिविटी एंथनी गिडन्स का है, जहाँ पे ही सेड दैट पीपल थिंक अबाउट एंड चेंज देयर एक्शन. ओरिएंटलिज्म बाय एडवर्ड साइड, उन्होंने कहा कि हाउ द वेस्ट स्टीरियोटाइप्स द ईस्ट एंड वेस्ट में ही ये थ्योरी कंडक्ट हुई थी के पर्सपेक्टिव से. सबऑल्टर्न स्टडीज़ जो था वो रणजीत गुहा का था. हिस्ट्री ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल, पेनॉप्टिकन, जेरेमी बेंथम. सो बेंथम ने यहाँ पे एक प्रिजन डिज़ाइन दिया था, प्रिजन मॉडल दिया था, दैट शोज हाउ सर्विलांस क्रिएट्स कंट्रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 261. अरेंज द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो इनके ऑप्शंस इधर हैं. ए एनलाइटनमेंट, बी स्ट्रक्चरलिज्म, सी पोस्ट मॉडर्निज्म, डी फेमिनिज्म. आज का लास्ट क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज ए, बी, डी एंड सी. पहले एनलाइटनमेंट आएगा जो कि 17 से लेके 18th सेंचुरी तक था, जहाँ पे बिलीव इन साइंस एंड रीज़न को हम रखते हैं. लोगों के अंदर साइंस और रीज़न पर बिलीफ आने लगा था. स्ट्रक्चरलिज्म में क्या हुआ, ये आया था 20th सेंचुरी के अराउंड, कि हियर वी स्टडी हाउ हिडन स्ट्रक्चर्स शेप सोसाइटी. सो फेमिनिज्म फोकसेस ऑन जेंडर इक्वालिटीज़, जो कि आया था 19th से 21st सेंचुरी के बीच में.
19th to 21st century. Then at last, postmodernism, then comes postmodernism, which criticizes big theories or big ideas and absolute truths, जो कि 20th century में आया था. अभी हमने ऊपर देखा भी पोस्ट मॉडर्निज्म, जहाँ पे मिशेल फुको, बॉद्रिलार्ड को हमने रखा था. So before we end today's video, I just want to remind you about the PDF I have created. So it is specially made for sociology students who are preparing for any competitive exams. So this PDF will help you revise important topics and practice questions in an easy and structured way. So the original price of the PDF is ₹199, but for a limited time I am giving you a 50% discount. तो आपको ये PDF मिल जाएगा 99 रुपीज़ में. मेक श्योर टू ग्रैब इट नाउ. अभी बहुत कम टाइम के लिए ऑफ़र बचा है. आपको अगर PDF चाहिए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. So I have uploaded a detailed video explaining everything about this PDF, including what's inside and how it will help you. So you can find the link to that video in the description below. Alright. So don't forget to check it out. Alright. So that's all for today's video. I hope you found it helpful. I'll see you in the next video. Also don't forget to like, share and subscribe to the channel if you haven't already. Thank you so much guys for watching.